Hello, good afternoon, student. Welcome in the lecture of engineering graphics. And we are trying to cover a unit of isometric projection. And till now, we have covered projection of isometric projection of three different objects. First is circle, second is isometric projection of square prism, and third one is isometric projection of cylinder. Now, in the third lecture of this unit, we will cover the isometric projection of pyramid. Okay, pyramid may be square, it may be pentagon or hexagonal, depend on the condition. Okay, after that we have to cover the isometric projection of cone, and as I mentioned earlier, we have to also draw the isometric projection of a particular object with changing its position with respect to the horizontal or vertical plane. Suppose in last two lecture, we have drawn isometric projection of a object which whose axis is perpendicular to HP, and object is also resting on ground. Okay, or HP. But how we can draw the isometric projection when the axis change its position and it become perpendicular to VP and parallel to HP? Then the condition to draw the isometric projection is changed. So the change process of isometric projection view, while when axis perpendicular to VP, we have to understand uh, in this upcoming lecture, okay. So in today's lecture we will start a problem which is based on isometric projection of pentagonal pyramid. Okay, so I will take example of pentagonal pyramid. um, okay, you can take you can take hexagonal pyramid or square pyramid, depend on the condition, it depend on your choice, it depends on your choice. I have taken pentagonal pyramid because square pyramid is a very simple figure. So basically, if we talk about the exam point of view, you will see the number of problem which is based on you will see number of problem or two or three problem, depend on the question pattern of the exam. More most of the problem based on pentagonal or hexagonal in the base. It is just because it makes your problem uh, much more complex as compared than to the square in base. Okay, so that's why most of the problem in the graphics, whether you are drawing in orthographic projection or isometric projection, most of the problem is based on pentagonal or hexagonal, because it makes your problem is more complex compared than the triangular or square. Okay, so that's why I have taken a problem which is based on pentagonal in base. Okay, so we will take a problem of pentagonal pyramid, that means pentagonal in base. So first write a problem, then we will start to draw it. Okay, so your problem is, I will dictate here, you have to write it on your practice book, then start it draw with the help of this video. Okay, and also take your all necessary drawing instrument while drawing this instrument. You don't need to draw these drawings with the free hand. Okay, always when you see these video, you have to take your drawing instrument and draw all the drawings of engineering graphics with the help of drawing instrument first. Okay, after that, in the practice session or in the earlier days of your examination, while your examination is going on, you can
practice these diagram with the free hand, but while in the learning stage we have to draw all the diagram of graphics with the drawing instruments only. Okay, you don't need to take it very lightly, and you don't need to draw it with the free hand as I have drawn in the earlier videos with the free hand without drawing instruments. Okay, so I am taking a problem of pentagonal pyramid. Okay, so first you write the problem. A pentagonal pyramid which is resting on HP on its base, and the side of base is 30 mm, and the axis of the pyramid is 60 mm long. Draw the isometric view of the given pyramid. Okay, तो अभी हम आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें, प्रोजेक्शन की बात भी आगे करेंगे. ओके, तो अब आपको प्रॉब्लम दी हुई है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये आपको ड्रॉ करने के पहले मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इनके टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना लेता हूँ. ठीक है, फिर हम इसकी बात करेंगे. फिर हम पेंटागन फिर हम मतलब इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम first we have to draw top view. In top view you will see a pentagonal as it is in the base of the given object. So first we have to draw a pentagon. How can we draw the pentagon? Of 30 mm side. Okay, so first draw a line of 30 mm side and make an 108 angle of 108. This is the angle of 108, and it is your point A, and this is your point B. Okay, so take 3 mm length, 3 centimeter length into the compass, and A as a center. Cut here, mark it here, and also again change your center. B as a center, radius remains same as 3 centimeter. Cut arc here, and it is your next point. So A B, it is become your C, and from C radius remains same as 3 mm because it is a regular pentagon, so all side will remain same. So from C uh, cut R with 3 centimeter radius. Okay, like that, and from this point also, so intersection of these all point gives the next point, that is D, and it is your point E. Meet D to E and C. It is your pentagon which is seen from the top. Now draw the front view. This is your XY line. Now draw the vertical projection. Vertical upward projection. Okay, to draw the front view of that particular pyramid. And also mark the center O of this pentagon. So how can we mark the center O? Or we have to say, in fact, I want to say, how can we identify the center O in the pentagon? Draw the perpendicular to the opposite side of any two corner. Okay, so sorry. So from D, draw a perpendicular to the AB, and from E, draw a perpendicular to AC. So it is the intersection gives the center O of the given pyramid, that is the O. How can we identify the center in the case of pentagon? You have to draw the perpendicular
on the opposite side of any two corner. Okay, so from corner D we have drawn a perpendicular to AB. From E we have drawn a perpendicular to AC. Intersection of these two lines gives you center O of that particular pentagon. Now draw the projection line, vertical projection, upward projection line from O also, because it gives you the axis of that particular pyramid. That is your axis line. Okay. Now draw the axis line 60 mm long, so it gives the height of 60 mm. Okay, this is this height of the pyramid. Now we have to draw the slant height. Okay, that is your O. It is your D. I have written here in the small and written here in the capital, so then make much difference. AB, so it will become your A dash and B dash. That is your front view, so dash should be there. Yeah, there, and it become your C dash C dash. Okay, so C dash is here and E dash is here. Okay, so A B, sorry, A should be there. Okay, A should be here in place of B. I will make it correct. Okay, and mark it again. That is your A, that is your B, C, and I also have to correct the point T in the small letter. That is your D. A, B, C, D, E. Okay, it is your top view, and it is your front view. And height of the front view will be 60 mm. Okay, because you know the length of the axis is 60 mm, so length of the axis become height of the pyramid, which is seen from the front, so it become your 60 mm. So what we have did so far, we have drawn a top view and front view of the given pyramid when it is resting on the HP on its base and axis perpendicular to HP. In that particular case, I have drawn first the top view of particular object and front view of the given problem. Okay, now we have to draw the isometric projection. In the main examination, you don't need to draw the top view and front view in the, because these top view front view shows the orthographic projection. Okay, we have drawn number of top view front view just like that in the previous unit of orthographic projection. So in the main examination, you don't need to draw the top view front view again in this way, but here I have to explain these things in very nearly manner, so that's why I have drawn the top view and front view. Then after that I have to make the isometric view of the particular object, because these things will gives you clear idea how I have changed the orthographic projection into the isometric projection, or from this whole process you will understand how the figure seen from the top as well as in the from the front in the orthographic projection, and how the figure seen in the isometric projection. So you will
make a clear difference between these two projection, orthographic projection and isometric projection. Okay, that's why I have drawn these top view and front view of the given problem. Now, in the upcoming video lecture, I will not draw these top view and front view in orthographic projection. Okay, because these are the starting lecture of this unit. That's why I have drawn the top view and front view of this object to understand the things, to make this thing easier to you. Okay, so now I have to follow the process to draw the isometric projection of that particular pyramid. Okay, so first we have to draw the given pentagon and bounded it into the rectangle. Okay, so first I have to draw a pentagon to make the isometric projection of given pyramid. So that is your pentagon. Okay, in this way you can make your pentagon and mark the point A. A should be here. A. This is your V. B. C. D. And E. Okay, and to draw the isometric projection, first make a rectangle over this, over over it. Okay, so I have to make a rectangle over the given pentagonal. Okay, just like that, something like that. Okay, so that is the required rectangle I have drawn over the pentagonal shape. Okay, that is also called offset method because I have bounded it into the rectangle. Okay, point name this rectangle. Okay, from the red I have to make it the point of this rectangle. It is 1 2 3 and 4. Now I have to draw the isometric projection. So for that, first I made a rectangle over the given pentagon, and after that I will draw the isometric projection. So first draw a straight line, mark a point, that is your point number. Suppose that is your point number 3. You can take any one of these 4 point 1 2 3 4. I have taken 3. So from 3 to 4 is your length and 3 to 2 is your width. So I have to draw length and width at the angle of 30 degrees. Okay, so I have to incline these length and width at the angle of 30 degrees. First draw angle of length and width at the angle of 30 degree, that is the 30 degree. Okay, it is also same as 30 degree. So 3 from 3 to 4 it become your point 4 and it is your point number 2. Point number 1 will appear something around something here. So I have taken a distance from 2 to 1 into the compass and mark it here. Again I have taken a distance 4 to 1 into the compass and mark it here, and intersection of these two gives the point 1. Okay, now take a roller scale and draw a parallel line which is parallel to 3 to 4. So put roller scale on 3 to 4 line and rolls it to 1 to rolls it till 1 to
two line, okay, and mark a one meet point 1 to 2 from a straight line which must be parallel to 3 to 4 line, okay, and also meet a point 1 and 4 from by a straight line which is parallel to 2 and 3 line. It is not correct. Okay, I have to draw a parallel line. Okay, always it is hmm. Okay, so as I did in previous lecture, I have maken a I have taken a square rectangle and draw its isometric view as we did in previous lecture. And after the projection of that particular rectangle, I have to locate the all point of this pentagon, okay. So we know that the point A and B have to locate on the line or on the 3 and 4 line, okay. So take this distance into a compass 3 to A and mark it here. So that will become your, oh sorry, Hmm. Take distance 3. What we have to do in the next step, we have to locate these all points of pentagon A, B, C, D, E as it is located in 2D figure. We have to locate these all the 5 points of this pentagon A, B, C, D, E on the 3D figure of the particular rectangle, okay. So first we take distance 3 to A into the compass and mark it here. Suppose it comes here, so that is your point number A. Point is A, and take this distance 3 to B into the compass and mark it here. So it is your B. I have to write here. It is your A, and this point is your B. Now on the 1 to 4 line, you have to mark the point C of the pentagon. So take this distance into the compass from 4 to C and mark it here. It is something here. It is your point C. Now take this distance into the compass 1 to D and mark on the 3D figure of this rectangle. So by this process your D point is here, and take this distance 2 to E. Okay, this is your point E. 2 to E into the compass and mark it here on the 2 3 line. So your E comes here, that is your point E. So all points of given pentagon I have marked on the rectangle. So join these all points with the straight line. Okay, so I have joined A to B, B to C, D to C, D to E, and D to A. Okay, and now I have to locate the axis of the pentagon, means O. So for the O, I have to draw the perpendicular from the two given corners. Okay, so first locate the O in that 2D figure. Now mark that particular O with the help of this rectangle into the 3D figure also. Okay, so first
I have to identify the point O in the 2D figure. Okay, so how can we identify it? Draw the perpendicular from the two corners of its opposite side, and intersection of these two perpendicular gives the axis of the pentagon. Okay, so that is your axis, and now I have to locate the O point into this 3D figure, isometric projection. Okay, so how can we locate it? So for that, for that we have taken this length. Okay, suppose this is your point M and दिस इज पॉइंट ई पे, ये तो आपका परपेंडिकुलर ई पे ही आ रहा है, इसी डाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ भी अगर हम देख लें तो ये पॉइंट क्या है आपका एन, ऐसे देखिए ये पॉइंट एम है, इसका परपेंडिकुलर सीधा एक्सटेंड किया एम, और इसका क्या है एन। देखिए ए बी पॉइंट, ए बी जो लाइन है उस पर हमें एम मार्क करना है, तो ए से आपने क्या किया, इस लेंथ पे 3 से एम की डिस्टेंस मेजर की कंपास में, है ना। टेक दिस डिस्टेंस 3 to m into the compass and mark on the same line 3 to 4 in the 3D figure. So 3 to 4 is here, and mark the point M in between of A and B. So it is a point M, and again you have to locate the point N. Point N is on 1 4 line. I have to extend it. Okay, further here. That is the point N. So कंपास में क्या करेंगे हम, 1 से n ये लेंथ कंपास में लेंगे और 1 4 वाली लाइन पे मार्क करेंगे। तो 1 4 वाली लाइन कौन सी, ये है, और इसमें हम क्या करेंगे, आपकी ये n मार्क करेंगे। तो 1 4 लाइन ये है, तो यहाँ कहीं मार्क करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा यहाँ। अब देखिए ये इससे जो m से हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे वो किसके पैरेलल होगी, 1 4, 1 4 के पैरेलल लाइन इससे एक्सटेंड करेंगे ऊपर डैश डैश करके। ये m से मैंने लाइन आगे बढ़ाई, लेकिन वो किसके पैरेलल है, 1 4 के। और n से भी हम पर एक लाइन आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल लाइन एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को आगे, है ना, इस लाइन को खींचेंगे जो कि पैरेलल किसके होगी, 3 4 के, तो इसके पैरेलल खींचेंगे। और इन दोनों का जो एक्सटेंशन होगा वो मतलब इंटरसेक्शन होगा वो आपको क्या देगा, पॉइंट ओ। ये आपका पॉइंट हो जाएगा ओ, ठीक है। अब ये ओ पॉइंट हो गया, ओ पॉइंट पे मुझे क्या देनी है, हाइट देनी, हाइट कितनी देनी, 60। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 mm की हाइट देंगे। तो यहाँ से ये 60 mm की हाइट है, ठीक है। ये आपका हो गया ओ। अब क्या करना है, इस ओ से सभी स्लेंटेज को मिलाना है। तो ओ से मैं डी को मिलाऊंगा, ओ से बी को मिलाएंगे, ओ से ई को मिलाएंगे, और ओ से ए को मिलाएंगे, ऐसे, ठीक है। इसको ए को द्वारा से मिला देते हैं क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ऐसे ही आएगा। ओ से सी को मिलाएंगे, ओ से सी डैश डैश आएगा, तो ओ से सी द्वारा से बना लेते हैं इसको। पहले आप ओ जो बना रहे हैं उसे डैश डैश बनाना पड़ेगा ना, ये एक्सेस लाइन, पहले इसको डैश डैश बना लीजिए। क्योंकि ये आपकी एक्सेस लाइन है। ये ओ वाली लाइन हो गई। अब ओ से सी को मिलाना, ओ से सी तो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि आपको आइसोमेट्रिक क्लियर देखना कहाँ से होगा, यहाँ सामने से 3 पॉइंट से। यहाँ से देखेंगे ओ डी दिखाई देगी, ओ ई दिखाई देगी, ओ भी दिखाई देगी, और ओ ए भी दिखाई देगी, बट ओ सी दिखाई देगी। तो ओ सी क्या करेंगे, डैश डैश, तो ओ से सी डैश डैश बना दीजिए, रेड से ही कर देते हैं। ओ से सी हो गया, और ओ से ए भी बनाएंगे, वो डार्क आएगी, मतलब कंटिन्यूस आएगी ना, तो आपकी ओ से ए हो जाएगी।
तो ये जो आपको बन गया, ये क्या बन गया, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द गिवन स्क्वायर पिरामिड। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ड्राइंग शीट पे विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। और आप पहले एक एक स्टेप करते जाएं, पॉज करते जाएं, फिर एक एक स्टेप बनाते जाएं, पॉज करते जाएं, आपका प्रॉपर फिगर बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको ड्राइंग करनी है, अपनी ड्राइंग शीट और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेके बैठना है और एक एक स्टेप के बाद पॉज करते जाना है, फिर एक एक स्टेप बनाते जाना है, ऐसे करके पूरे स्टेप फॉलो करना है। तो आपका ये जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पिरामिड का बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो रेड है यही डार्क से करना है जो मैंने किया है, बाकी ये सब ब्लू से है वो क्या करना है आपको 2H और 3H पेंसिल से करना है, लाइट बनाना है। ठीक है, ये यहाँ भी आपको रेड से ही करना है, मतलब डार्क करना है। मैंने इसमें कहा है कि सेंटर ओ को लोकेट करना, ओ को लोकेट करना मैं एक और बताता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या करना है, पहले तो ओ को यहाँ लोकेट करना है। यहाँ कैसे लोकेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी किया है, सब जगह करते हैं हम। उसके कॉर्नर से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर एक डी से डाला और ई से डाला, किन्हीं भी दो कॉर्नर। सी से डालते तो अपोजिट साइड, सी के अपोजिट क्या होती है बी डी सी, तो यहाँ डाल दे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो भी कॉर्नर के अपोजिट साइड है उस पर परपेंडिकुलर डालना है और उनका इंटरसेक्शन ओ देगा। तो ये 2D में तो हो गया, लेकिन अब इसको 3D में लोकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने इनको ये 1 2 3 4 रेक्टेंगल ना उस पर प्रोजेक्ट कर लिया, तो इसको आगे प्रोजेक्ट किया, ये 3 4 3 लाइन पे आ गया, और इसको भी आगे प्रोजेक्ट किया, ये 1 4 लाइन पे आ गया। और यहाँ जैसे हमने ABCD मार्क किया ना 1 2 3 4 पर, ऐसे ही हमने एम और एन मार्क कर लिया, और एम से एक वर्टिकल लाइन को बढ़ाया आगे, जो किसके पैरेलल होगी 1 4 के, और एन से वर्टिकल लाइन को बढ़ाया जो किसके पैरेलल होगी 4 3 को। यहाँ बस पैरेलल लाइन डालनी है, वो भी रोलर स्केल से। अगर पैरेलल लाइन सही है तो पूरा फिगर आपका करेक्ट आएगा। तो ऐसे ओ आ गया, ओ से मैंने ये एक्सिस बना दी, वो आपकी होगी, फिर इनसे स्लैंट इसको बना दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना। नहीं आएगा तो आप वही मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको कोशिश करें, ड्रॉ करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और ऑब्जेक्ट लेके आएंगे जो कोन होगा, आगे फ्रस्टम होगा, और फिर हम इसका पोजीशन भी चेंज करेंगे। अभी ये क्या है, एक्सिस HP के परपेंडिकुलर है, आगे हम करेंगे एक्सिस को VP के परपेंडिकुलर, तो उससे भी ड्रॉ करेंगे, वहाँ भी थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है ना। अब जब भी आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाओ फिर ये बनाओ, लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए। देखिए ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू है, यहाँ 2D दिख रहा है आपको, फ्रंट दिख रहा है तो वहाँ टॉप नहीं दिख रहा, टॉप दिख रहा है तो फ्रंट नहीं दिख रहा, और 2 डायमेंशन दिख रही है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है आपका, जिसमें आपको लेंथ ये है, विड्थ ये है, और ये आपकी हाइट है। ठीक है ना, जब आप ड्राइंग स्टूडेंट से बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपका विजुलाइजेशन आएगा। ओके, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप व्यू बनाओ, टॉप व्यू को क्या करें, क्योंकि वो HP प्रेस्ट कर रहा है तो टॉप बेस बनाना है, बेस में क्या है पेंटागन है, पेंटागन बनाओ, फिर रेक्टेंगल में बंद करो, सीधा रेक्टेंगल का 3D बनाओ, उस पर ये पेंटागन के पॉइंट लोकेट करो, वहाँ से फिर ओ सेंटर मार्क करो, उससे उसकी एक्सिस बनाओ और मिला दो डायरेक्ट। बस ये सब नहीं बनाना, मैं बता रहा हूँ, और आगे से मैं ये सब बनाऊंगा भी नहीं अभी नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।